Okay, Bill. Before starting the fundamental theorem of arithmetic, one more thing, what I have left, that is the question related to linear combination. If the question is find the HCF of two given positive integers by using Euclid's division algorithm, also express the HCF in the form of linear combination. क्वेश्चंस में कह रहा हूँ HCF फाइंड करो और HCF को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करो. देन हाउ वी विल एक्सप्रेस इट. समटाइम्स also if the linear combination of the HCF is given in the question, कभी कभी linear combination find करने बोलेगा, कभी कभी linear combination of the HCF is given in the questions and we will have to find the missing variable. We will have to find the missing variable. On that moment, how we will do the questions? Just go through the example. Your question is find the HCF of the number 867 and 255. Right now we were finding the HCF of these two numbers by using Euclid's division algorithm. Also express the HCF in the linear combination. Your question is just derive the HCF in the form of linear combination. So at first we will find the HCF. You know how to find? So this is the method. Actually 867 is greater than 255. Means if we will apply Euclid's division lemma on these two numbers, Euclid's division lemma says dividend equal to division into quotient plus remainder. So this is the dividend, this is the division. Actually this is greater than this one. जो बड़ा है वो dividend होगा. Means 867 is the dividend. And this is the divisor. On dividing this by this, we will get 3 as a quotient and 102 as a remainder. Actually 102 is not equal to 0. Actually remainder is not equal to 0. That's why again we will apply Euclid's division lemma on divisor and remainder. Same work I have repeated over here. Again we will see remainder is not equal to 0. Means again we will apply Euclid's division lemma on these two, divisor and remainder, and finally we have got remainder becomes 0. Means this is the last divisor, means this is the HCF. इतना तक तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया. अभी उसी क्वेश्चंस में कह रहा है एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन. लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करो. तो whenever we have to express the HCF in the form of linear combination, then just go through the second last step of the Euclid's division algorithm. जो एल्गोरिदम आपने यूज किया उसमें आप सेकेंड लास्ट स्टेप से रन करो. तो दिस इज द लास्ट स्टेप. एक्चुअली यहाँ रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, तो दिस इज द लास्ट स्टेप. आप सेकेंड लास्ट से चलो. जहां रिमाइंडर 0 हो गया उसके जस्ट पहले वाले से चलो. तो गो फ्रॉम दिस. This is an equation. From here, just separate the HCF. Actually, we will have to write the value of the HCF. So from here, on separating, actually, what is the second last step? Your second last step is 255 equal to 102 into 2 plus 51. We have to express the HCF, not 255. So just separate the HCF. Your HCF is 51. Just separate the HCF from here. 51 is equal to 51 can be written as what? So on separating 51, we will have to write 255 minus 102 into 2. आपको 51 का वैल्यू लिखना है, तो इस टर्म को क्या करोगे? ट्रांसपोज करोगे LHS साइड में, और जब इसको ट्रांसपोज किए LHS साइड में तो ये इधर प्लस है तो माइनस हो गया. मींस 255 माइनस दिस. एनी प्रॉब्लम? नाउ वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट स्टेप.
This is the second last. Now we will go through the third last. From here, this is the third last. From here, we will write, again we will write the value of remainder. From here, we will take the value of remainder and substitute over here. यहां से हम लोग रिमाइंडर का वैल्यू लेंगे और उसको यहां क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. चलो छोड़ दो इसको. फ्रॉम हियर 102 becomes what? Since 102 can be written as 867 minus this one, means 51 equal to 255 minus 102, and 102 equal to 867 minus 255 into 3. This is the value of 102 और यहां है मल्टीप्लाई 2, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से. एनी डाउट? अगर क्लियर नहीं है तो यहां रीजन में डाल दो. एक्चुअली 867 इक्वल टू 255 into 3 plus 102. फ्रॉम हियर 102 का वैल्यू जो मिला उसको यहां सब्स्टिट्यूट की, तो 102 का वैल्यू यहां क्या होगा, 867 माइनस दिस वन. 867 में ये माइनस हो गया, इसको मैंने 102 की जगह रिप्लेस किया into 2. सॉल्व दिस इक्वेशन. This one can be written as 51 equal to 255 minus 867 into 2, and this minus becomes plus 255 into 6. अब मन में आ रहा है सर ये क्यों कर रहे हो? तो actually we have to write the linear combination. Linear combination means indirectly the question says just write the HCF in the product of, in the form of two given number. HCF को दो given number के वे में लिखो. तो आपका जो दो given number था 255 और 867, उस केस में ये कन्वर्ट हो गया. अब इसको आप सॉल्व कर लो. ऐसे भी आप देख रहे हो इसके बाद कोई स्टेप नहीं है, मतलब अब कोई स्टेप बचा नहीं यूज करने के लिए, मतलब अब मुझे कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है. तो आप इसको सॉल्व करो. सॉल्व मतलब सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू 51 आएगा. सॉल्व नहीं करना है, आप इसको एक्सप्रेस करो दो गिवन नंबर के लिए. यू कैन सी 255 दोनों जगह. एट फर्स्ट अरेंज इट. 255 प्लस 255 into 6 and minus 867 into 2. 255 on taking common over here. Here 255 into 1 and plus 6. 255 on taking 255 common. Here we will get 1 and here we will get plus 6. Minus 867 into 2. This can be written as 255 into 7 minus 867 into 2. This also can be written as 255 into 7 plus 867 into minus 2. This is the value of 51. एक्चुअली HCF जो है वो दोनों नंबर के केस में आ गया. ओके, दिस वन कैन ऑल्सो बी रिटन एज 51 इक्वल टू 255x plus 867y, where x equal to what, 7, and y equal to what, minus 2. तो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन. कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होगा कि ये गिवन होगा 255x and 867y. क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो सबसे पहले आप एक्सप्रेस करो इस केस में, और इस केस में एक्सप्रेस करने के बाद आप देख लोगे कि x की जगह पे क्या आ रहा है, y की जगह पे क्या आ रहा है. तो वॉट एवर बी एट द प्लेस ऑफ x, दैट इज द वैल्यू ऑफ x.
and whatever be at the place of I, that is the value of I. समझ में आया? One more time I am repeating. This one, no any problem? We will have to express the linear combination. For expressing the linear combination, at first we will have to go through the second last step of Euclid's division algorithm. So this is the last step. This is the last. Why this is the last? Actually here remainder becomes 0. So this is the second last. From here, this is the second last. 255 equal to this one. From here, we will separate the HCF. 51 can be written as what? 255 minus, ये इधर प्लस में है, इधर जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये इधर प्लस में ऑन ट्रांसपोजिशन it becomes minus. Any doubt? Now we will go through the previous step. This is the second last, and now we will go through the third last. So from here again we will find the value of remainder. So from here find the value of remainder and substitute over here. So from here 102 equal to what? 102. This is the second last. Sorry, this is the third last. 102 equal to 867 minus this, और 102 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया. तो 102 की जगह पे ये वैल्यू मिला into 2 into 2. Solve this. You will get, finally you will get. Understood? Any doubt? And now this is the method for expressing the HCF in the linear combination, or sometimes linear combination of the HCF is given, then find the value of variables. Is it clear? Now we will discuss on the fundamental theorem of arithmetic. Right now. Okay, one more thing. By using these concepts, you can do all the questions of exercise 1A. Now we will start fundamental theorem of arithmetic. Okay, we will see the fundamental theorem of arithmetic in the next video. Thank you.